some years UPSC might be asking polity, and suddenly 1 year it will dip it down. So in such a circumstance, it becomes very difficult to predict the trend. पहले अगर होता तो मैं हाँ ये बोल देता कि आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, तो उसमें से मेजर 50 क्वेश्चंस अराउंड उसके स्टैटिक और करंट अफेयर से आ जाएगा. So what trend UPSC is basically setting is you have to respect each subject. Last 4 साल में किसी का भी ट्रेंड एक तरफ जा ही नहीं रहा है. You see a lot of zigzag things happening here. So this leads to utter confusion, and that is why prelims becomes very difficult. अगर आपने वो न्यूज़ सुना भी नहीं है but static knowledge का अंदाजा है, then you can easily solve this. The only way by which you can score in these questions is don't take any new source for these portions. Read geography, environment and international relations as one block. The reason being, you will subconsciously be able to connect better, but do not go beyond this. One standard book and one current affairs compilation. आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिखे, कुछ भी दिखे, just don't go there. Just complete these books और उसके बाद prelims निकलना ही है. So let us start. Now, if you see, since prelims is just around 3 months or slightly more than 3 months, there are 3 questions which any aspirant will face, particularly right now. First is, कितने साल का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए? How many years of current affairs do we need to study? मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा. Then second question is, करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त स्टैटिक लिंकेज कितना होना चाहिए? So how much of current affairs should I actually read the static background of it? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेंट्स को मेजर कंफ्यूजन कहाँ होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये बहुत करंट अफेयर्स अभी टॉपिक है, बट शायद स्टैटिक में हम उतना उसके अंदर तक नहीं जाते. तो क्या हमें वो भी पढ़ना है या नहीं? स्पेशली अगेन विथ रिस्पेक्ट टू स्कीम्स, तो उसका गवर्नेंस एंगल भी होता है. Polity, economy, heavily static oriented. How do we go across? That is what we are going to explore in this particular webinar. और last 3 months जो इस साल दे रहे हैं उनके लिए और जो 2026 में भी देंगे, how do you plan your next 3 months? Considering अभी बहुत सारा content आपके दिमाग में होगा, how do you streamline that particular content? कौन सा छोड़ना है, कौन सा रखना है? So we will also be exploring ki what should our strategy be for the next 2-3 months. Okay, so before delving into each and every aspect of Samachar Manthan and the current affairs, let us first understand how UPSC has asked questions in prelims over the past 10 years and over the past 5 years specifically, and let us see if we can get something out of it. Now if you see, इसको तीनों को मैंने चारों को क्लब कर दिया है, तो 17 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज इफ आई टेल हिस्ट्री से आ रहे हैं, which includes art and culture, ancient history, medieval history and modern history. On an average पॉलिटी का component भी high है, and similar is the case with economics and environment. ये एक पॉइंट पे इन्हें big 4 subjects कहा जाता है. Now let us analyze a bit more and you will find कि questions on an average तो इतने number of questions आ रहे हैं, but subject wise काफी सारे changes हुए हैं. If you see, history has seen some amount of dip, कम क्वेश्चंस आए हैं ओवर द इयर्स जो पहले आते थे. पॉलिटी का भी अगर आप वैसे देखोगे तो पॉलिटी एक टाइम पे 23-24 क्वेश्चंस आते थे, सो मच सो कि 22 में वो 11 तक आके पहुंचा, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड टेकिंग एन अपवर्ड ट्रेंड. Same goes the case with economics. Now this is stark, 27, 25, 27, 20, but when we come to 2024, there were 16 questions. Now these questions include agriculture, government schemes,
trends from your economic survey and budget. So essentially what I'm trying to tell is जो आपका एवरेज है वो essentially ट्रेंड शायद डिनोट ना करता हो. Some years UPSC might be asking polity, and suddenly 1 year it will dip it down. So in such a circumstance, it becomes very difficult to predict the trend. And that is why what is more interesting even here is geography. अगर आप देखोगे, in the last 4 years, it is again seeing a significant rise. सो एसेंशियली जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चंस घटे हैं वो ज्योग्राफी और आईआर को मैंने करंट अफेयर्स एंड जनरल जीके के अंदर डाला हुआ है. तो दो सब्जेक्ट्स हैव सीन एन इंक्रीज. अभी प्रिपरेशन के वक्त प्रॉब्लम क्या होता है, वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन सम notion which the toppers of our previous years या फिर coaching issues they provide us. But my point is कि now new subjects are becoming critical. पहले अगर होता तो मैं हाँ ये बोल देता कि आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, तो उसमें से मेजर 50 क्वेश्चंस अराउंड उसके स्टैटिक और करंट अफेयर से आ जाएगा. सो व्हाट ट्रेंड यूपीएससी इज बेसिकली सेटिंग इज you have to respect each subject, be it a history, be it a environment, be it a international relations and current affairs as well. The reason being कि इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्वेबल होते हैं. सो दिस इज आवर ब्रीफ आइडिया कि इस स्लाइड से जो हम फर्स्ट आइडिया लेके चलते हैं वेबिनार के अंदर कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट. ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको शायद हम छोड़ दें या सोचें कि बाद में करेंगे एंड वो फिर रह जाता है. वो वाला प्रेजेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के सिनारियो में नहीं पॉसिबल है. उसका रीजन है कि लास्ट 4 साल में किसी का भी ट्रेंड एक तरफ जा ही नहीं रहा है. यू सी अ लॉट ऑफ zigzag थिंग्स हैपनिंग हियर. तो this leads to utter confusion and that is why prelims becomes very difficult, because आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करना है और एक प्लान पे लाना है वो स्ट्रेटेजाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज व्हाट वी विल एक्सप्लोर नाउ. नो सपोज imagine this is a pie chart or this represents 100 questions which will come in your prelims. If you go and check प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, उसके ट्रेंड में जैसे मैंने बोला कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेंड निकालना मुश्किल है, बट हम प्रिपरेशन के लिए दूसरी तरह से भी इस 100 क्वेश्चंस को देख सकते हैं. आपका करंट में अप्रोक्सीमेटली 1/3 क्वेश्चन आता है और स्टैटिक बुक से अप्रोक्सीमेटली 2/3 क्वेश्चंस आता है. तो फर्स्ट टेक अवे एज एन एस्पिरेंट which we should take is static books are primarily important. Even if you want to study current affairs, static is very, very, very important. And why that is important, we will see now. Abhi, we will delve more into this current affairs part and see how we can make this part easy. Static के लिए तो books available है, but current affairs इतना random होता है, it becomes very difficult for us कि उसको कॉन्साइज करना कि इतना ही हमें पढ़ना है. तो इसमें बेसिकली वी हैव एनालाइज 4 टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन व्हिच कम्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स. टाइप 1 है जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स होता है. दिस इज यूजुअली सम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट विच एसेंशियली इम्पैक्ट्स द एंटायर कंट्री. जैसे एग्जांपल अगर लूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, this came in 2023 and
देयर वाज अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स न्यूज अराउंड दिस, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इनफैक्ट 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आया. सो यू मस्ट बी अवेयर कि ये एक्ट कब से स्टार्ट होने वाला है, लागू कब से होगा, कब तक इन फोर्स रहेगा, और उसके मेजर 5-6 प्रोविजंस क्या है. क्वेश्चन आप देखोगे इसी के इर्द गिर्द ही है. अभी ये मोस्ट ऑफ देम करंट अफेयर्स में लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड पूछा गया है. Now, if you have watched some of my burning issue lectures, that is where this aspect will again become very important, because you will ये जैसे नारी शक्ति फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, यही उसका बेसिक थीम था, और ये हमने एक पर्टिकुलर क्लास में कवर किया था. तो आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज अगर हो, इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू स्पॉट डायरेक्ट करंट अफेयर्स न्यूज. सिमिलरली और एक क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया, दैट इज ऑन एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, एंड इट आस्क्ड यू व्हिच वन ऑफ दिस इज करेक्ट. नाउ 2020 मित्र शक्ति 2023 प्रीवियसली जैसे हम पढ़ते थे कि आप किस कंट्री के साथ मित्र शक्ति होता है, यूजुअली उतना ही पूछते थे. नाउ यूपीएससी हैज गॉन a step further in direct current affairs based questions. So essentially, something which is nationally affecting the entire country, और जिसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया एज अ होल रिप्रेजेंट्स, उसमें आप थोड़ा सा इन डेप्थ करंट अफेयर्स becomes necessary, be it an exercise mitra shakti where India participates, or where it is an act which is a landmark act which will affect not only India in the present time but the generations to come. और ऑनेस्टली मैं बोलूं, डायरेक्ट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, बिकॉज आप कोई भी कंपाइलेशन उठा लो ना, बस सिविल स्टडी का नहीं, हर किसी का अपना अपना कंपाइलेशन होगा जिसे आप पढ़ रहे होगे, किसी और इंस्टीट्यूट का या फिर अपने खुद के नोट्स, कुछ भी कर लो आप, ये पर्टिकुलर करंट अफेयर्स न्यूज आइटम्स आप स्किप नहीं करोगे. ट्रिकी हमारे लिए प्रिपरेशन कहाँ होता है, फर्स्ट लेवल 2 और टाइप 2 करंट अफेयर्स जब पूछना चालू करता है. जैसे it went a step further and asked about the duties of the chief of defense staff. Extensively news में था. uh, a new chief of defense staff was appointed the previous year. अभी उससे उसने उसका ड्यूटीज, यूपीएससी आस्क्ड अस द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सो एसेंशियली वो करंट अफेयर्स के फंडामेंटल्स अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना, कि व्हाट रोल will the chief of defense staff play. I'll take one more type next. Now here, this is the place where समाचार मंथन या बर्निंग इशू में हम जिस तरह से कवर करते हैं, this becomes very easy for students in the sense you have to spot the static portion of a particular current affairs news. उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स न्यूज का थीम क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल, last year, a news came where Supreme Court asked the center to set up a new panel and to set up a new delimitation panel for so and so reason. अभी इसमें हम एक्सटेंसिवली इस न्यूज को तो पढ़ते ही हैं, क्योंकि ये हर करंट अफेयर्स न्यूज में आ गया होगा या कोई कंपाइलेशन में आ ही गया होगा. बट आप अगर इससे क्वेश्चन जो है वो देखोगे, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ दैट पर्टिकुलर करंट न्यूज. However, ये इसके स्टैटिक बैकग्राउंड पे जा रहा है. How many delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023? So this was in news, the delimitation commission, for a significant reason, because Supreme Court had asked the center to establish. बट क्वेश्चन जो पूछा है वो स्टैटिक से आपके पूछा है, आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा नंबर ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट्स. दिस इज वेयर finding
द प्रॉपर क्वेश्चन कि कहां से पूछ सकता है, दैट बिकम्स रिलेटिवली इजियर. Similarly, there was another news item which was all over the news, where Lok Sabha Ethics Committee had instituted a probe against a certain MP. Now, again, we might have read this news very extensively, but iska static background kya hai? Ethics Committee was established. So it directly asked a question which was related to Ethics Committee in the Lok Sabha, and had nothing to do with the current affairs news कि किसने किया, किसके ऊपर हुआ, जो हम यूजुअली पढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त. ये आपको डायरेक्ट अगेन वही लक्ष्मीकांत में ही मिल जाएगा, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में. फॉर अस, स्ट्राइकिंग आउट दीज न्यूज आइटम्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम्स, क्योंकि ये आप पढ़ोगे स्टैटिक में, बट इट हैज अ इनहेरेंट लिंकेज टू करंट अफेयर्स. बट उसका करंट अफेयर्स न्यूज शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ एथिक्स कमिटी जो आने वाला है. और फिर फोर्थ टाइप और लेवल 4 क्वेश्चंस जो आए हैं, इट इज फ्रॉम द अप्लाइड करंट अफेयर्स सेक्शन. नो, व्हाट इज अप्लाइड करंट अफेयर्स सेक्शन? These particular news, you will not find it at one particular source. You will find it across the internet, but सारे points इस particular news item के आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिलेंगे. एग्जाम्पल, जैसे सुमेध पाइपलाइन के बारे में पूछा गया, इज अ स्ट्रेटेजिक रूट and it connects Red Sea with the Mediterranean Sea. If you see the source of it, the source was from US Energy Information Administration, which had talked about Red Sea choke points. And Sumedh is one of them. Similarly, it asked you about the details of Digital India Land Records Modernization Program. आपने शायद ये कहीं पे पढ़ा होगा कंपाइलेशन में, ये कहीं अलग जगह पे पढ़ा होगा, बट एक जगह पे तीनों मिलना मुश्किल है. Now, what to do and how do we approach these kind of questions? That again, we will discover it through a particular structure. And this is what we are going to do in the next few months of Samachar Manthan as well. So usually हम पढ़ते हैं, पहले अपना स्टैटिक कवर करते हैं और फिर करंट अफेयर्स कवर करते हैं. और हमने अभी देखा, स्पेशली पॉलिटी और इकोनॉमी में करंट अफेयर्स से जितना नहीं पूछता, उसके लिंकेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो उसका स्टैटिक बैकग्राउंड है. So this is the knowledge which we have taken from the first few slides. Now, how do we approach current affairs? पहले है करंट अफेयर्स जो डायरेक्टली, जो टाइप 1 करंट अफेयर्स है, उनको हमें डायरेक्टली कंपाइलेशन से ही पढ़ना है. वो कोई भी कंपाइलेशन हो, भले ही आपने मंथली अक्रॉस द मंथ उसे पढ़ा हो, या तो कोई एक इंस्टीट्यूशन का लास्ट मिनट कंपाइलेशन लेके आए हो. टाइप 1 हम डायरेक्टली कंपाइलेशन से ही ये आंसर सॉल्व हो जाएंगे. अभी टाइप 2, दिस फंडामेंटल्स, इसके लिए आपको स्टैटिक बुक्स कवर करने बहुत ज्यादा ही नेसेसरी है, और स्पेशली द स्टैटिक पोर्शन ऑफ 4 particular subject which is polity, economy, environment and geography. These questions will be solved only you have a very good grasp over static and compilation. Then you have current affairs derived static. ये जो पोर्शन है, इसमें आपको करंट अफेयर्स न्यूज अवेयर होना जरूरी है, बट आंसर्स आप सॉल्व करोगे प्योरली स्टैटिक नॉलेज. अगर आपने वो न्यूज सुना भी नहीं है बट स्टैटिक नॉलेज का अंदाजा है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस. करंट अफेयर्स यहाँ पे हेल्पफुल कहां पे होगा? आपको वो लिस्टिंग देने में कि दिस ईयर दीज स्टैटिक पोर्शंस आर इंपॉर्टेंट. जैसे एथिक्स कमेटी एस्टेब्लिश हुआ, आपने कहीं बस न्यूज में देख लिया, तो वो आपके लिस्ट में आ गया कि ये एथिक्स कमेटी के बारे में मुझे पढ़ना है.
डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कहीं बात चल रही है, वेरी पॉलिटिकल न्यूज दीज आर। तो डिलिमिटेशन कमीशन आपको स्टैटिक बुक से पढ़ना है, ना कि वहां पे जाके वो पूरा डिबेट्स और वो देख रहे हो। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट which is applied current affairs. The only mantra to answer these questions, the only way by which you can score in these questions is don't take any new source for these portion. जो स्टैटिक और जो कंपाइलेशन है जिसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, उसी में से आ गया तो आ गया, आपको 100 तो लाने हैं नहीं प्रीलिम्स में। For example, that is why I took these two questions. If you're good with your static and compilation, maybe you will solve this particular question. That is Digital India Land Records Modernization Program. And probably you won't score this. It is fine. आपको इस पर्टिकुलर ऐसे दो तीन क्वेश्चन रहेंगे मैक्स, इस क्वेश्चन की वजह से there's a greater probability that you will make a mistake here. So you can just leave alone these questions. So coming to the one thing which I said during the start of the session, हमको पढ़ना क्या है, मेजर फर्स्ट फोकस हमारा जो रहेगा पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड द कंपाइलेशंस। एंड हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी देम? वी आर गोइंग टू स्टडी देम यूजिंग ब्लॉक्स। मान लो, नो दिस इज, I have taken the averages of what we discussed in the first slide. मान लो this year these many questions come from those particular subjects. I have included current affairs as a part of these subjects. जैसे पॉलिटी का करंट अफेयर्स पॉलिटी के साथ प्रिपेयर हो रहा है, तो रीड देम एज ब्लॉक। इफ यू हैव योर ओन टेक्निक बाय विच यू आर रीडिंग या खुद का स्ट्रेटेजी बनाए हो, डोंट ऑल्टर दैट। Take few points if you feel you can fit it into your strategy or some strategy which probably some of your mentor would have told. This is my view of looking at it. If you want to emulate the entire thing, you can. If you want to take some parts of it and then emulate it in your strategy, then do that. Whatever suits you the best, because in this particular exam, each and every individual has his or her own strengths and weaknesses. Coming back to the slide, so I have put economics and polity in one block because this is heavily static oriented and you have to link current with the static constantly, as we saw in a previous slide. So read these blocks together. Polity is as such very memory oriented, whereas economics is more conceptual and has some memory aspect with respect to the trends. Then read geography, environment, and international relations as one block. The reason being, you will subconsciously be able to connect better. क्योंकि आईआर में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड मैप बेस्ड. Once you are very well versed with geography and which feature lies where and so on and so forth, you will come in interaction with the world map a lot more. अब बार बार मैप को रेफर करोगे एंड दिस इज द टाइम वेर यू विल यूज योर पैसिव मेमोरी एज वेल, कि आप आईआर के लिए भले मैप देख रहे हो बट आपको कुछ ज्योग्राफी का याद आता रहेगा तब. तो दिस इज व्हाट विल टेक यू थ्रू स्पेशली ड्यूरिंग योर prelims preparation, क्योंकि if you see these three as one block, a lot of things will become interconnected and you will be able to understand the linkages much better. Then I have science and tech and history and culture as one block. Why so? Because history and culture is very memory oriented. Prelims के लिए, however, tricks and techniques we take out, but the fact of the matter is you have to work hard. You have to remember a lot more stuff. You cannot escape memorization. आप लिख के उसे पढ़ो, बार बार देख के, बार बार माइंड मैप्स बना के याद करो. Those tricks can vary, but there will be a lot to memorize.
Now, when you have a lot to memorize in history and culture, and which will be essentially dry facts just before prelims, science and tech appears interesting at a lot of point because a lot of logic is involved in that, and this is a relatively new subject for many of the people because वो जनवरी फरवरी जब तक नहीं होता साइंस एंड टेक के ऊपर अप्रोच करते ही नहीं है. सो दिस विल हेल्प यू सॉल्व कि अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा और फैक्ट्स याद करके आपको परेशानी हो रही है, यू हैव योर बर्नआउट टाइम, आपको सैचुरेशन आता ही है, दैट इज वेरी नॉर्मल. वो सबके साथ होता है. इन दैट केस साइंस एंड टेक, सिंस इट इज अ न्यू सब्जेक्ट, it will allow you to escape that burnout. Now many of you, बहुत जनों के साथ क्या होगा, बहुत जनों का स्ट्रॉन्ग होल्ड शायद पॉलिटी हो सकता है, किसी का शायद ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हो सकता है क्योंकि उनका ऑप्शनल वो है. इन दैट केस अगर आपके नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं तो जो वीक पॉइंट है उसको टारगेट कर लो उस टाइम. रीडिंग इन ब्लॉक्स विल हेल्प यू टू रिवाइज मोर एंड कीप 2 subjects per day. Don't go 3 because it will be too much of इधर उधर का content. And don't go 1 subject per day because you will go very in depth with respect to a particular subject. और पीछे छूट जाएगा कुछ जो से आईआर हुआ या साइंस एंड टेक हुआ जिससे एक्चुअली क्वेश्चन आ रहा है, कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा है. सो कीप 2 subjects each. These can vary for each person, but this is one way where you can approach prelims in the next few months. And while doing this, one thing which you need to be very careful is, मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स अलग से इंक्लूड नहीं किया है. द रीजन बीइंग, अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो उसके साथ करंट अफेयर्स, दिस बिकम्स योर बुक लिस्ट. अगर आप ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटीज एंड एनी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो उसके साथ करंट अफेयर्स बिकम्स योर अदर बुक. So these entirely, this becomes your 3 or 4 books for your prelims preparation. Current affairs को अलग अगर पढ़ना है वो बाद में कभी आप पढ़ सकते हो, बट आई वुड प्रिफर कि अगर आप करंट अफेयर्स को एक साथ पढ़ते हो स्टैटिक के साथ, then you will able to link it much better. We'll take an example right now. This is to happen in a future Samachar Manthan class, so I'm telling you beforehand. So now this is a question, sorry, this is a news item. Supreme Court dismisses plea against anti-defection law. Now here, first thing जो स्टैटिक से है, that is जो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक में आपने पढ़ा होगा, anti-defection law. Now dismissed a plea challenging the anti-defection law in the Constitution. Now, what is plea? Was it a PIL or was a writ that was filed? Now this is the second static part. ये 3 स्टैटिक मिल गए आपको, इस न्यूज का और कोई काम है ही नहीं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. ये 3 जाके आप आराम से अपने स्टैटिक बुक से पढ़ लो. ये किसी कंपाइलेशन में भी आप ऐसा कोई देख रहे हो, कोई न्यूज आइटम और ऐसे, स्पेशली इन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और आपको वहां पे कोई टर्म ऐसा लग रहा है जो कि स्टैटिक का पार्ट होना चाहिए एसेंशियल, देन जस्ट गो बैक टू योर स्टैटिक बुक्स एंड रीड दोज एस्पेक्ट्स. बाय स्टैटिक बुक्स आई मीन वन पर्टिकुलर स्टैटिक बुक. आपको 10-15 स्टैटिक बुक्स नहीं, डीडी बासु भी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर प्रीलिम्स. देन यू गो बैक टू लक्ष्मीकांत एंड रीड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. और 3 चीजें ही पढ़नी है इसके बारे में, प्रोविजंस, इवैल्यूएशन और जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है. कि केसेस में क्या बोला है, किलो तो होलोहन केस में क्या बोला था, उतना अभी जरूरत नहीं है. दैट इज अ पार्ट ऑफ मेंस. डोंट गो फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस गोपाल, वो वन ऑफ क्वेश्चन जो आएगा आएगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा, और इकोनॉमिक्स का भी वो कहीं ना कहीं आ जाएगा. आप बस इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करो और इसको ब्लॉक की तरह से करो, वॉट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल, बट डू नॉट गो बियॉन्ड दिस. वन स्टैंडर्ड बुक एंड वन करंट अफेयर्स कंपाइलेशन.
आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिखे, कुछ भी दिखे, जस्ट डोंट गो देयर, जस्ट कंप्लीट दीज बुक्स, और उसके बाद प्रीलिम्स निकलना ही है. इफ इट गेट्स ओवर देन ट्राई टू रीड इट अगेन. ये वाला हमने पिछले वेबिनार में भी अगेन डिस्कस किया था. दिस वाज अबाउट आर्टिकल 311. So at first instance, Article 311 becomes very important of the Constitution with respect to civil servants और उन्हें क्या powers and responsibilities मिली है. Then the second part of it becomes principles of natural justice. और हमारे Constitution के कौन कौन से features principles of natural justice uphold करते हैं. Some of the articles probably. Then doctrine of pleasure किस किस situation में apply होता है, किस किस situation में नहीं होता है, किस किस सिचुएशन में नहीं होता है. दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस न्यूज. अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या बोला, आगे क्या होगा, आगे पैनल एस्टेब्लिश होगा, दिस इज द करंट अफेयर्स. सो यू नीड नॉट गोइंग टू टू मच into the depth of it. So now I am pretty sure you have a pretty clear idea of what to leave for your prelims. You cannot take that as a very proper hint. जैसे मैं अगर बोलूं जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आए, फिर वो सेकंड टाइम गया, अभी स्पोर्ट्स के यू कैन रीड सम पार्ट्स ऑफ इट वेयर इंडिया इज इन्वॉल्व, या फिर कोई ओलंपियाड हो रहा है, इट हैज मेड अ रियली बिग न्यूज, बट यू कैन नॉट कॉन्स्टेंटली हार्प ऑन दैट. आप ट्रेंड प्रीलिम्स में एक हद तक गेज कर सकते हो, और उस ट्रेंड की वजह से शायद आपके 7 8 10 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए, बट अल्टीमेटली जो आपको प्रीलिम्स क्लियर कराएगा वो आपका स्टैटिक पे होल्ड और करंट अफेयर्स पे होल्ड, और 10 जगहों से नहीं, एक जगह से. अवंतिका, फॉर 2026 start reading static first and current affairs. If you are attending samachar manthran lectures, that is enough. If you are not attending, then follow compilation or daily newspaper reading. Since current affairs वो स्टैटिक जब तक आपका क्लियर नहीं होता है, तो करंट अफेयर्स आप लिंक करना बहुत बाद की बात हो जाएगी. स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स करते चलो. क्वेश्चन लीक एंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, दिस विल बी अ गुड टॉपिक फॉर मेंस. प्रीलिम्स में जैसे हमने देखा कि अगर आपने जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो आपके टर्म्स तो याद रहे ही होंगे आपको. उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज है, तो उसको लक्ष्मीकांत में जाके वापस पढ़ लो, या स्टैंडर्ड बुक में जाके वापस पढ़ लो. दिस इज वन गुड वे टू अटेम्प्ट. अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात आती है, देन आपने खुद ही बोल दिया, प्रोटेस्ट इज अ वर्ड विच इज देयर इन फंडामेंटल राइट्स चैप्टर. तो उसके ऊपर 2 3 फीचर्स ही हैं, तो जस्ट गो एंड रीड दैट. इससे बाद का बैकग्राउंड की कौन आएगा, रेगुलेशन क्या है, डू नॉट गो सो मच इनटू इट. No, this is a part of Samachar. No, no special classes for prelims particularly. जो समाचार मंथन है वो क्लासेस ईयरली लिए है, उनके लिए ही उनका प्रीलिम्स वाला कवर चल. I think some classes will be there for the dominant prelims students as well. I don't know species or some of the major micro themes.